सो आज हम डायनेमिक्स सेक्शन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो जस्ट बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। So question number 1 is a man pulls a slack of mass 25 kilogram across the level ground with the horizontal force of 60 Newton. So a constant force of friction is of 20 Newton acts on slack. So what is the acceleration of the slack? So uh, let's uh, let's figure it out. We have a 60 Newton horizontal force along this direction and 20 Newton force along this direction, which is a friction force or a constant frictional force. And we are interested in the acceleration of the slag. So we have the mass of the slag is 25 kilogram and total resultant force. So the total resultant force is 60 minus 20, and 60 minus 20 is 40. 40 is the net force acting on it. And the acceleration should be by using the second law of motion. So by applying the Newton's second law of motion, we will get the F is equal to ma, and the accelerations comes from here. So 40 divided by 25, which is 1.6 meter per second square. So the right option is option B. So the second question is, a car moves in a circle of constant speed. What is the direction of the resultant force acting on a car? So this is the center of the circle turning by the car. So this is the center of circle, and when we complete this circle, it will the circumference of circle looks like this. Move. This is the center of circle. So we join this the line from one point to the another point on the circumference of circle and passing through the center of circle, which is the diameter of the circle. So यहाँ से हम figure out कर सकते हैं कितना हमारे पास ये large circle है. तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ सर्किल है और यहाँ पर कार मूव कर रही है, इसके ऊपर ये फोर्सेस अप्लाई हो रही है मुख्तलिफ डायरेक्शंस में उसने दी हुई है. ठीक है, तो हमने बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार. तो रिजल्टेंट फोर्स जो एक्ट कर रही है उस पर वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल है, जिसे हम सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं. इट मींस दैट द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल. तो सेंटीपिटल फोर्स इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्सेस एक्ट ऑन अ पॉइंट. एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं. ठीक है, सो व्हाट इज द साइज ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स का साइज क्या होगा? तो अपवर्ड डायरेक्शन में हम वर्टिकल डायरेक्शन में अपोजिट फोर्सेज हैं और मैग्नीट्यूड्स आर सेम. ठीक है, मैग्नीट्यूड एक जितने हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. और जो हॉरिजॉन्टल साइड्स हैं हमारे पास वो 8 न्यूटन और 4 न्यूटन है. दे विल जस्ट लाइक हमारे पास एक वेक्टर 8 न्यूटन का यूं करके हो जाएगा और 4 न्यूटन का यूं करके हो जाएगा. ठीक है, तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम 4 न्यूटन. ठीक है, तो 4 न्यूटन की नेट फोर्स है आपके पास टूवर्ड्स, अगर आप इसे ईस्ट कह लें, टूवर्ड्स वेस्ट. देन अगेन हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें कहता है व्हेन अ कार टर्न्स अ कॉर्नर एट अ स्पीड एंड इट ब्रेक्स टॉपिंग ओवर यानी इसका पलटने का रिस्क है. सो टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कार आर द हाइट ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट व्हील. ये जितना इनके फ्रंट व्हील का डिस्टेंस ज्यादा होगा ये स्टेबल होगी, और जितना इनका सेंटर ऑफ मास की हाइट है वो कम होगी तो ये ये स्टेबल रहेंगी. ठीक है, so which factor makes the car most stable? So for the column 1 में हमारे पास center of mass है और column 2 में distance between front wheels है. तो column 1 के अंदर हम देखते हैं कि लो होना चाहिए. ठीक है, और column 2 में हम देखते हैं कि distance between the front wheels are large, हमारे पास large होना चाहिए, और जो center of mass है वो लो होना चाहिए. तो इसका मतलब right option is D. अच्छा, the question 5 is a metal ball of mass 0.3 kg and the weight is 3 Newton is held on that it is below the surface of oil. It experiences an upward force of 0.3 Newton. ठीक है,
So the weight is 3 Newton and the upward force is 0.3 Newton. So the net resultant force is just by subtracting the weight uh, and upward force. So just subtract upward force from weight and 3 minus 0.3, which will be 2 point something. So the mass is just like 0.3 kilogram. So what, when the ball is released, what is its initial acceleration? इसकी initial acceleration क्या होगा? ठीक है, so initial acceleration हमने मालूम करनी है. तो उसे मालूम करने के लिए हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है 0.27, ठीक है, और जो हमारे पास mass है वो है 0.3. Then according to the Newton's second law of motion, A is equal to F over m, and 0.27 divided by 3, which is 9 Newton. So 9 Newton is the why 9 meter per second square या 9 Newton per meter. ठीक है, so 9 Newton per meter भी हम इसे लिख सकते हैं और 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं. ठीक है, दोनों एक्सेलरेशन की यूनिट है. सो द राइट ऑप्शन इज 9 मीटर पर सेकेंड. Question 6 is the Earth travels in a circular orbit around the sun at constant speed. Constant speed से sun के around move कर रही है. ठीक है, तो which arrow shows the direction of the acceleration of Earth and the direction of velocity of the Earth. ठीक है, तो acceleration of the Earth is towards the center of Earth. ठीक है, और velocity जो है वो टेंजेंशियल है, हर पॉइंट पर डिफरेंट उसकी डायरेक्शन है. सो velocity is look like this. ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ये इस तरह नजर आती है, हर पॉइंट पर डिफरेंट है. सी ये क्यू हो जाएगी और जो एक्सेलरेशन है वो आर है. तो आर इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड क्यू इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, सो विच ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑब्जेक्ट हैज द लार्जेस्ट रिजल्टेंट फोर्स. तो इसमें से आप देखें कौन सा ऑब्जेक्ट जिसकी लार्जेस्ट एक्सेलरेशन है, तो लार्जेस्ट फोर्स है, which is obviously option C, when we have on right hand side we have a 10 Newton force and on the left hand side we have a 30 Newton force. So the difference is 20 Newton towards left side. ठीक है, तो जो largest resultant हमें मिल रहा है वो 20 Newton मिल रहा है. अच्छा, question number 8 is, in which examples does friction act in the direction of forward motion of the body object on which it acts? So in which example? So on a suitcase accelerating on a conveyor belt. ठीक है, friction act in the direction of forward motion. Forward motion में friction work कर रही है. On which it acts. So a sandpaper rubbing on a wood block, obviously वो हमारे पास है on the skis of a skier accelerating downhill on smooth snow or on the tires of the braking car. ठीक है, so on a suitcase accelerating on a conveyor belt. ठीक है, suitcase जो मूव कर रहा होता है कन्वेयर बेल्ट पे, वो बुनियादी तौर पे फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा होता है और फ्रिक्शन उसे आगे मूव लेकर जा रही होती है. ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास सेम हुआ करती है. So question number 9 is a diagram represent a moon in its orbit around the earth. Which arrow represents the direction of resultant force acting on the moon at the instant shown? So obviously A is toward the center of earth. So moon is revolving around the earth. So the force is acting towards earth. So earth is the center of for this motion. Achha. So another question is, an apple of mass 0.15 kg and the weight is 1.5 Newton falls from the tree. So at one point during its fall, the air resistance on the apple is 0.6 Newton upward. So what is the acceleration of the apple at its point? So हमारे पास जो mass है apple का वो 0.15 kg है और जो weight है वो है 1.5 न्यूटन. ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, ठीक है,
यानी ऑब्वियसली हमारे पास जो एयर रेजिस्टेंस है एप्पल पर जो अप्लाई हो रही है वो कितनी है 0.6। तो 1.5 से ही नीचे आ रहा है जो कि इसका वेट है 0.6 से ये इसे रेजिस्टेंस मिल रही है एयर की तरफ से। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है दैट वुड बी द नेट फोर्स। So 1.5 divided by 0.6 is 0.9 Newton is the resultant force acting on it, and the mass is 0.15 kg. So F over ma is equal to A is equal to 0.5, 0.9 over 0.15. This is the mass of the apple, and the acceleration must be 6 meter per second square for this apple, which uh, which falls from with the weight of 1.5 Newton, and the air resistance acting on it on the upward direction is 0.6 Newton. So for the gravitational forces that act between bodies in the solar system are described below. So which two forces, Newton's third law, pair action and reaction? So P and R. P is the force on the moon due to the earth, and R is the force on the moon, earth due to the moon. हमारे पास दो हमारे पास पेयर बन रहे हैं P and R. Then question number 12 is a man push a heavy box along the ground. So a force acts between the man's hand and the box. So another force acts between the man's feet and the floor. In which direction do these forces act on the man? So force on the man's hand, and we have a column 1 and we have a column 2 when force on man's feet. तो एक मेंस के हाथ पे लग रही है और एक उसके फीट पे लग रही है, यानी वहां से उसे फोर्स मिल रही है और वहां पाँव फीट से उसे फोर्स मिल रही है और वो बॉक्स पर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, सो फोर्स ऑन द मेंस फीट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, वो लेफ्ट की तरफ है, एंड फोर्स ऑन मेंस हैंड इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ होगी क्योंकि वो राइट की तरफ इसे मूव करवा रहा है, तो ये लेफ्ट की तरफ होगी। और फोर्स ऑन द मेंस फीट इज टुवर्ड्स द राइट, राइट की तरफ होगी बिकॉज क्या वो उसे लेफ्ट की तरफ मूव करवा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। So in which situation is the resultant force on a body equal to zero? किस सिचुएशन में जीरो होनी चाहिए? A train going up a straight hill at constant speed in a straight line. So a train going up a straight hill at constant speed. So at constant speed means there is or in a straight line means there is no acceleration. If there is no acceleration, so it means that the resulting force on a body equal to zero. A satellite is orbiting the Earth, and what is the direction of force on the satellite causing its this circular motion? So towards the center of Earth. So उसकी जो डायरेक्शन है वो towards the center of Earth होगी, जैसे हमारे पास मून की डायरेक्शन होगी। ठीक है, the diagram shows a block of stone on a rough horizontal surface. Force P act on a block as shown. The block is at rest. A frictional force F acts on the block. Block पर F apply हो रही है. Which row shows the direction of and the size of F? तो जो F का साइज है वो F ऑब्वियसली अगर ये टुवर्ड्स राइट है तो टुवर्ड्स लेफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो टुवर्ड्स लेफ्ट होगी इसकी जो फोर्स होगी, एंड साइड्स मस्ट बी द सेम बिकॉज द ब्लॉक इज एट रेस्ट। ब्लॉक रेस्ट में जितनी आप फोर्स लगा रहे हैं इतनी आपको फोर्स मिल रही है। ठीक है, so the block is in a state of rest, the net resultant force is zero. So distance traveled by a car in an increasing uniform as it is driven along a straight road up, a quantity of for the car is constant but not zero. So obviously the kinetic energy uh, of the car is constant but not zero. So because it is moving, so its kinetic energy will remains constant.
अगेन हमारे पास वही एग्जांपल है और उसके अंदर हमने ये बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स force on the boy is the resultant force in direction of y towards the center. Okay. So in a model of atom, at the electron moves in a circular orbit around the nucleus. So which statement about the electron is correct? The acceleration of the electron is towards the central radius. Centripetal acceleration होगी वो towards the center होगी, towards the nucleus होगी. So a particle P is moving in a horizontal circle about O. P moves at constant speed. So which statement is true? A force of constant size acts on P towards O. So जो force apply हो रही है वो constant size की है acts on P. जो P पर acts कर रही है towards O. तो हमारे पास जो यही statement है हमारे पास correct मिलती है when the particle is moving in a horizontal circle. ठीक है? If the P is moving at a constant speed. So a car of mass 1500 kg travels along a horizontal road. ठीक है? Horizontal road पे travel कर रही है and it accelerates steadily from 10 meter per second to 25 meter per second in 5 seconds. So what is the force needed to produce this acceleration? So car of mass is 1500 kilogram and travels along a horizontal road. Its acceleration must be the difference between the velocity and the rate of this difference. So the rate of change of this velocity is the acceleration, which is 25 minus 10 divided by 5, which is 15 divided by 5 is 3. So acceleration is 3 meter per second square. And what is the force needed to produce this acceleration is acceleration multiplied by the mass. So 3 multiplied by 1500, which is the 4500 Newton. So this force is needed to produce this acceleration. So balance force are acting on a moving body. What happens to the direction of movement and the speed of the body? So option D is does not change. Direction of movement does not change and speed does not change. It means that this is the constant speed moving along the same direction. So this is a balance force acting on a moving body. So a student kicks a ball horizontally along a ground as he goes. As he does so, his feet applies a force to the ball. At the same time, the ball applies a force to his feet. So how do these forces compare? The force on the feet is equal to the force on the ball in the opposite direction. जो force हमने जो force on the feet है वो equal है the force on the ball जो हमने ball पे लगाई है but in the opposite direction. So right option is A. Thank you.